भारत माता की जय। भारत माता की जय। पाल्टानो दरकार पाल्टानो दरकार भारत माता की পাল্টানো দরকার তাই চাই বিজেপি সরকার। Where are the jobs in Paschim Bengal? Where are the startups in West Bengal? In the last 15 years, where is the growth of business been in West Bengal? Let's focus on the most important thing. Where is the economy of West Bengal today? When a state of UP is doing so well, the state of Maharashtra is doing so well, the state of Andhra Pradesh is doing so well, the state of Gujarat is doing so well, the state of Tamil Nadu is doing so well, and the list goes on and on. But our focus under the guidance of our leadership, Shri Narendra Modi ji, is to bring crores of job opportunities to West Bengal. If the people believe in a change, and if a people jeta bhoy ache na, if they shed that bhoy and they believe in the change, I guarantee you the next 5 years I will personally work with my hands and my heart for the people under the leadership of Shri Narendra Modi ji and our entire leadership of our party, that we will make Bengal great again with education, with sports, with giving benefits to entrepreneurs, both male and female, to be self-employed. I've been a self-employed professional since I was 14 years old. We must encourage the youth to shine, and shine not just only in our towns and our villages, but in our villages and our towns and our state, and also globally. Today, to start up an IT company, it would take a startup IT company 3 years to be a multi-billion-dollar company that would take a Tata's to do over 20 years. Startups today are the fastest growing businesses. Today in Paschim Bengal, we have the most minuscule startups in the country. Today we are sitting here supporting the youth. For every youth, until they find a job, we will support 3,000 rupees to them to make them stand on their feet and give them the courage to shed this fear they have. We will stand with the youth. We will stand with the entrepreneurs to make Bengal great. আমি অলিম্পিয়ান আছে না, চাই টেনিস হয়, চাই ফুটবল আমার ফার্স্ট লাভ, চাই ক্রিকেট হয়, চাই বক্সিং, আমি তো বক্স করে না, এখানে আমার চ্যাম্পিয়ন আছে এখানে, চাই বাঙালি হয়, या चाय पंजाबी, या चाय गुजराती, या चाय फ्रॉम एनी स्टेट, আমি হিন্দুস্তানি আছি। হ্যাঁ, পশ্চিম বাংলালে স্পোর্টস খেলাড়ি, যেটা পশ্চিম বাংলালে স্পোর্টস এডুকেশন, স্পোর্টস বিজনেস, স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, যেরকম বিসিসিআই আছে,
তাই টেনিস ফেডারেশন, ফুটবল ফেডারেশন, হকি ফেডারেশন এরকম করতে চাই। If you look at the support that Sri Narendra Modi ji gives to the Olympic movement, yes, and India is bidding for the 2036 Olympics. I hope to be spearheading that under the leadership of Sri Narendra Modi ji. But one anecdote, when the Olympic team came back from Paris, our Prime Minister Sri Narendra Modi ji invited the losers in the Olympics to come and meet them. He met them in his home. He welcomed them. He shook hands with them. He consoled them and gave them support. অনেক বড় বাত আছে कि the Prime Minister of the country met the losing participants of the Olympics. To me, that shows a great leader. That he didn't only win for Vijender Bhai to win an Olympic medal or Liana Bhai to win an Olympic medal and then invite us. He has picked us up and given us a platform to make a difference in the community. जो बड़ा लीडर होते हैं दुनिया में, वो दूसरे को अपॉर्चुनिटी देते हैं बड़ा होने के लिए, और वो दूसरों के अपॉर्चुनिटीज जो देते हैं वो पूरे देश के लिए देते हैं कि बच्चे को चैंपियन बनाए, ओलंपिक्स का चैंपियन या स्कूल का चैंपियन या सिटी का, स्टेट का चैंपियन। तो जो नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं टॉप स्कीम के साथ, खेलो इंडिया के साथ, विकसित भारत के साथ, खेलो इंडिया एक एसोसिएशन और बॉडी है कि ओलंपिक बॉडी बनके हर खिलाड़ी को, ओलंपिक खिलाड़ी को सपोर्ट दे। टॉप स्कीम से हर ओलंपिक खिलाड़ी को सपोर्ट मिलते हैं, और खेलो इंडिया की वजह से टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया 7 मेडल जीत चुकी। हमारा देश का हिस्ट्री में ये सबसे बड़े जीत। अभी जो आने वाले ओलंपिक्स जो है 2036 ओलंपिक्स, हम क्या करके दिखाएंगे वो हमारा मेहनत है। हमारा सब भाई और बहन जो ओलंपिक्स खेले हैं उसका मेहनत है। तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब भाई और बहनों को एक साथ लाके ओलंपिक्स इंडिया लाना पड़ेगा। हमारा मेहनत यही थी। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, ये मौका हमको मिले कि विकसित भारत, ये जो पैशन हमारे अंदर है 40 साल, मैं तो इसके काफी उम्र, मगर 40 साल से बाबा का मेडल का इंस्पिरेशन ले, माँ का बास्केटबॉल कैप्टेंसी का इंस्पिरेशन ले आपके सामने बैठा हूं कि एक दिन ओलंपिक्स इंडिया में आने वाला ही है, और 10 मेडल से भी ज्यादा हम जीत के लाएंगे वापस। प्रधानमंत्री, ये हमारा है। There is a lot of smokes and mirrors in politics. There is a lot of mudslinging. I would rather give you fact and show you the economy of India over the last 15 years that has risen every single year, and then compare that to the economy of West Bengal that has been declining every single year over the last 15 years. I sit in front of you as a Hall of Famer. That means facts. Facts don't lie. Anyone can sit on a mic, me included, and talk.
But please go back and check your facts of what I'm saying. Or check the facts. That when you look at the incline of the economy of India under the leadership of Narendra Modi ji, and then you look at the decline of West Bengal over the last 50 years that I've been gone. Be the change you'd like to see in the world. If the people that I know already want a change, they need a change. If they have the courage to come out and vote in the state of West Bengal, where I was born, I guarantee you in the next 5 years, under a new leadership, under Shri Narendra Modi ji, you will see not just 1 crore, but multitudes of crores of jobs in this state. You will see education rise in the state. You will see sports rise in the state. Today, how many athletes do we have playing in the Olympics from Bengal? How many champions do we have playing in all our sports? Cricket, hockey, football, tennis, badminton, shooting, boxing, track and field. How many do we have? I guarantee you, if the people shed the fear and come out and vote, and they believe in the change that they want and they need, West Bengal will be greater. Because in the heart of every Bengali, in the heart of the Maidan, in the heart of every person that lives in Bengal, sports and youth is the focus. যেরকম আমি বাবার সঙ্গে খেলেছি ময়দানে, আমার বাবা মোহনবাগানে খেলেছে, হ্যাঁ, ময়দানে আমি শিখেছি। যেরকম ইরাঙ্গার সঙ্গে আমি, so it's a start. The start has to happen somewhere. One day the BJP will come into power in West Bengal. And you will see the rise of the state of West Bengal and the rise of the people of West Bengal. The day, जिस दिन आप हमको मौका देंगे इस शहर को चलाने के लिए, इस स्टेट पश्चिम बंगाल को चलाने के लिए, उसी दिन आप देखेंगे कि 3,000 रुपया के साथ हम शुरू कर रहे हैं। तब वुमेन एम्पावरमेंट फोकस में, तब जॉब्स फोकस होगा, तब स्पोर्ट्स एजुकेशन फोकस होगा, तब एजुकेशन फोकस होगा कि हमारे बच्चे माइग्रेट न करें दूसरे मेट्रो को न माइग्रेट करें, मगर बंगाल में ही वो ग्रेट बन सकते हैं। जितना फैमिली बिजनेसेस है बंगाल में, जितना फैमिली बिजनेसेस है बंगाल में, सब बच्चे बाहर जाके पढ़ के वापस आते हैं, तब फैमिली बिजनेस हाथ पे लेते। क्यों? यहीं पे अपने फैमिली बिजनेस को साइड बाय साइड पढ़ाई लिखाई और फैमिली बिजनेस को करो, बच्चे को एम्पावरमेंट दो। सो इट इज द स्टार्ट of the support system. But the day the people give us a chance to lead from the front, Bengal will become great. Paschim Bangale, bhoy out, bharosha in. Bhoy out, bharosha in. আমি বলতে চাই, তখন পশ্চিম বাংলার great.